So yes, Yogesh, welcome to Yourpedia platform. Let's Thank start your snap for subject. You have interview in HPCL. Yes, go ahead, Yogesh. I have done my B.Tech in civil engineering from Delhi Technological University and my M.Tech in Geo Technical Engineering from Delhi Technological University. Okay, when you got your masters? In last year, June 2022. Okay, fine. And today you want snap for Geo Technical Engineering, right? Hello. Yes, Yogesh. I think you have network issue, Yogesh. So you can proceed with your audio only. Okay, sir. Just switch off your video. Is it fine now? Yes, sir. This time okay. So Okay. today you want snap for the geotechnical engineering, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can you tell me what are the two engineering properties of the soil? Yes, sir. The first one is void ratio Hmm. and second one is porosity, sir. These are the engineering properties of the soil. Yes, sir. Okay. So your master's is in what domain? The geotechnical engineering. Geotech. So what about the shear strength, permeability, compressibility at all? They are also properties. Hmm. So can you define what is the meaning of the shear strength of soil? Yes, so basically, sir, shear strength is the resistance offered by a soil against the shear failure. By the soil particles, basically, against the shear failure. And how will you calculate the shear strength of soil? For that, we have a formula that is C plus sigma into tangent of phi. C plus sigma tangent Of phi. phi. What is C? What is sigma? What is phi? C represents the cohesion value of a soil, and sigma represents the total stress, basically, and phi represents the angle of internal friction, which is the interlocking resistance offered by the particles of the soil. Okay, I think for the engineering problems, we are taking the effective stress, na? We are not taking the total stress. No, sir. For that, we have to take into account the effective stress. Okay, so what are C and phi? So C is the cohesive property, cohesive strength of a soil, and phi represents the angle of internal friction. Okay, if we have to calculate this C and phi, then how will you calculate? So first of all, we can take the help of Mohr circle and Mohr field envelope. And for go in with the real sense. Sorry, sir. Go with the real sense. How you can calculate the C and phi? Mohr circle, you need something, na? To draw a Mohr circle, you need this. Yes, we need actually, sir. We can perform the triaxial test for that. Triaxial test. Yes, sir. Okay, so what you are getting in the triaxial test? We will getting the norm sigma 1 value, that is a major principal stress, and the minor principal stress values. And accordingly, we can calculate draw the Mohr circle, and then we can draw a tangent to the Mohr circle to get the Mohr failure curve. And from reading the plot, we can determine the value of C and phi. I think there the failure envelope is defined now. Suppose yes, if sir. Then how will you write this C value from the Mohr circle? Actually, sir, जैसे हम वो ड्रॉ करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस के बीच का जो प्लॉट होता है, जो मोर सर्कल बनता है सर जिससे, उसका जो y इंटरसेप्ट होता है वो C वैल्यू देगा. तो कैसे पता चलेगा y इंटरसेप्ट कितना है? सब उसके लिए सर हमें मोहर सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करना है सर. ओके. यस सर. अब देखो, जैसे मान लो एन एग्जांपल, दिस इज माय मोहर सर्कल. मान लो इस तरह से बना सेम एग्जांपल. अब टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करोगे? हियर यू विल ड्रॉ टेंजेंट, हियर यू विल ड्रॉ टेंजेंट. वी हैव द सो मेनी पॉइंट्स हियर 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 वेयर. सर जिस पॉइंट पर सर जो shear स्ट्रेस और जो नॉर्मल स्ट्रेस है सर, उसका रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस के साथ मैक्सिमम एंगल बनाएगा वो सर. उस पॉइंट पर उन पॉइंट्स को के अकॉर्डिंगली जो टेंजेंट होगा दैट विल. वो पॉइंट कहां पे होगा योगेश?
जहाँ पे जो नॉर्मल है वो रिजल्टेंट के साथ मैक्सिमम यहाँ पे एंगल बना रहा है? Sir, that I don't remember right now. Okay, fine. How will you define the permeability? Sir, permeability is defined as the ability of the soil through which water can be transferred from it. Okay. So suppose if we have two soil A and soil B. Soil A having higher void ratio, soil B having lesser void ratio. So which one having higher permeability and why? Soil A, sir. Why? Because, sir, as we know the Kozni-Kármán equation, according to that, permeability of a soil is directly proportional to E cube upon 1 plus E. So that's why. Okay, E cube upon 1 plus E. Fine. Okay, so can you tell me, if we have clay soil, one is clay and suppose another one is we have the sand. So clay having the higher void ratio, sand having the lesser void ratio, still sand having the higher permeability. Why this thing is there? Then clay should have the higher permeability, na? Yes, sir. सर क्ले सर क्ले के अंदर से कोहेशन ज्यादा होता है सर, और sand अपनी सर फ्रिक्शनल सोइल एक तरीके से। क्ले के अंदर कोहेजन ज्यादा होगा और सर सैंड के अंदर सर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा। Yes, sir. ओके, तो उससे परमेबिलिटी का क्या लिंक है? सर परमेबिलिटी होती है सर इंटरकनेक्टेड वॉइस से कितना इजीली वाटर फ्लो कर सकता है। तो सर जितने ज्यादा के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो सर वो ज्यादा क्या होगा सर, वो इजीली फ्लो कर, सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सर उसमें परमेबिलिटी का। तो वॉइड्स होंगे सर वो ज्यादा मतलब कम होंगे उसमें, इस कारण से सर तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा वाटर को। चलिए, अच्छा अगर मुझे परमेबिलिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा तो मैं कौन से टेस्ट प्रेफर करूंगा फील्ड पे? फील्ड में if सर we have to calculate the permeability of soil, then how I can calculate on field? सर इन फील्ड सर सर कंसोलिडेशन टेस्ट सर। कंसोलिडेशन टेस्ट? यस सर। ये कैसे किया जाता है फील्ड पे? सर एक्चुअली इट इज अ लैबोरेटरी टेस्ट सर। So name any two field test also. Okay, lab test. Sorry, name any two lab test also. फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट एंड कौन Just सा for दिमाग में यही तो आ रहे थे, बट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन आई जस्ट गिव द रॉन्ग आंसर। okay, no issue. So anything else you want to know? यस सर। सर और मतलब कि सर मैंने अभी तक 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने शुरू किए हैं टेक्निकल के लिए सर। एक तो है सॉइल मैकेनिक्स, जबकि मेरा एमटेक भी है तो सर वो मुझसे पूछ ही सकते हैं। दूसरा सर मैंने जो विजेंद्र सर ने बोला था फ्लूइड मैकेनिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सर वो रिवाइज किया। तो उसके ठीक है, अलावा कौन सा रहेगा? आरसीसी आप लेके चलो। ओके सर, आरसीसी भी आप लेके चलो। थैंक यू सर।